Now we'll start with exercise 14.2, and I'm hiding this because I don't want you to see right now. Just focus on the question. Exercise 14.2 problem 14 nahi re 4.2 problem sums in chapter 4 are spread throughout. So this one is problem sums of exercise 4.2. Find two numbers whose sum is 27, product is 182. दो नंबर का सम 27 है, तो यहां से जो निकलेगा उसको assumption बोलते हैं. Assume or assumption. Let first number is equal to x. Second number automatically आता है 27 minus x because sum is 27. सम अगर 270 होता तो x and 270 minus x हो जाता. So this is a fixed thing which you have to by heart. Assumption हो गया. अब equation product is 182. किसका product? दो नंबर का. First number multiplied by second number is 182. X into 27, 27x minus x square is 182. Rearrange, send everything on the right side. X square minus 27x plus 182 is 0. You have to do middle term splitting and find the value of x. Put it here and find the first and second number. Let me finish off this sum. वन 182 के फैक्टर्स निकालो. 2 91 जा 7 13 जा 13 1 जा. मुझे -27 चाहिए. 7 2 जा 14 एंड 13. दो टीम बन गई. x square minus 13x minus 14x plus 182 is equal to 0. After taking common, you will get x minus 13, x minus 14. Therefore, the two values of x are 13 or 14. So, if x is 13, 27 minus x is 14. This is the answer. लेकिन ये और है, तो x 14 भी हो सकता है. तो if x is 14, automatically 27 minus 14 is 13. The two numbers are 13 and 14. Next problem sum of exercise 4.2. Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. इसको मत देखो. Two consecutive positive integers. Two consecutive positive integers का assumption ऐसे होता है. Let two consecutive positive integers be x and x plus 1. Assumption over. Consecutive मतलब back to back, जैसे 13 14, 20 21, 30 31, 43 44 etc. So two consecutive integers are x and x plus 1. उसका क्या? Sum of whose square is 365. Sum मतलब प्लस दो चीज का टोटल is 365.
but it's not the total of these two, it's the total of the square of these two. So x का square or x plus 1 का square is 365. For example, two consecutive integers are 3 and 4. The sum of their squares is 25. Two consecutive integers are 7 and 8. The sum of their squares is 113. 64 plus 49. 64 plus 49 113. वैसे ये यहाँ पे दो नंबर आएंगे जिनके स्क्वायर का टोटल 365 है. So assumption ready, equation ready. Now you have to solve the equation. X square plus x plus 1 whole square is x square plus 2x plus 1 is equal to 365. X square plus x square 2x square plus 2x 365 जब माइनस होने आएगा तो प्लस 1 के साथ मिक्स होके माइनस 364 हो जाएगा. Don't do middle term splitting of this because 2 can be taken out common. 2 अभी भी कॉमन निकल सकता है. Therefore x square plus x minus 182 is equal to 0. And 182 के फैक्टर्स अब भी किए थे 13 and 14. So plus 14x minus 13x minus 182 is 0. Therefore the two factors are x plus 14 and x minus 13. Therefore the value of x is minus 14 or 13. नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे हम. x is equal to 13. Therefore you have to go back to your assumption and put 13 in its place. Therefore two consecutive positive integers are 13 and 13 plus 1 14. Next sum 4.2 exercise say पता था. Altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than the base. Hypo 13, find the other two sides. राइट एंगल ट्राइंगल की बात चल रही है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो. कुछ तो भी नाम दो. ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऑल्टीट्यूड मींस हाइट. And height of a right angle triangle means this side. Altitude is 7 less base. Altitude is 7 less base. AB, क्योंकि altitude AB है, is 7 less BC. बेस BC है. किसी को तो x लेना पड़ेगा. Let BC is equal to x, क्योंकि BC राइट साइड में है. जैसे ही BC को x लिया, AB is 7 less than BC मतलब x minus 7. AB मिल गया x minus 7. If the hypo is 13,
You have successfully found out the three sides of right angle triangle. एक x minus 7 और तीसरा 13. All you have to do is Pythagoras theorem. Right angle triangle आते ही you have to do Pythagoras theorem says side square plus side square is hyposquare. X square plus x minus 7 square is 13 square. Solve this and you will easily find the value of x. X square plus x minus 7 whole square is x square minus 14x plus 49 is equal to 13 square is 169. X square plus x square 2x square minus 14x minus 120 is equal to 0. Minus 169 plus 49. 2 common. X square minus 7x minus 60 is equal to 0. 12 5s are 60 and minus 12 plus 5. So x minus 12 x plus 5 middle term splitting हो गया. Therefore x is equal to 12 and x is equal to minus 5. Negative value हम नहीं लेंगे. X is equal to 12. Go back to your right angle triangle and put x is equal to 12. Therefore this side is 12 and this is 12 minus 7 5. 5 12 13 तुमको पता है Pythagoras theorem होती. Sum over. Sixth sum. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production is 90, find the number of articles and cost of each article. कितने players हैं यहाँ पे? Number of articles, cost of each article, total cost of production. कितने आर्टिकल बनाए? नंबर ऑफ आर्टिकल्स. हर एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या था? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल और टोटल कॉस्ट क्या था? There are 3 players. बोलो और दरवाजे बंद करो. फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day that the cost of production of each article was 3 more twice number of articles. That's your job to decode cost of each article was 3 more twice number of article. अब पता चला कि कौन से 2 मेंबर का assumption होगा. Number of articles, cost of each article. Number of articles, cost of each article. किसको x लेंगे? जो राइट साइड पे है. So number of articles x, number of articles x, but twice number of article.
2x, but 3 more than twice number of articles है plus 3 और is, was और will be हमेशा is equal to होता है और लेफ्ट साइड पे है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अपने आप कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मिल गया 2x plus 3। सो इनिशियली थोड़ा सा टफ लगेगा। इफ यू विश यू कैन रिवाइंड एंड सी अगेन, बट दिस इज हाउ इट इज। आगे पढ़ो। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन on that day was 90 rupees, total cost 90 rupees, fine, blah blah blah। कितने आर्टिकल बनाए, नंबर ऑफ आर्टिकल, हर एक का कॉस्ट मल्टीप्लाई करो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, उससे क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। कितने आर्टिकल बनाए, x, हर आर्टिकल का कॉस्ट क्या था, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब 2x plus 3, टोटल खर्चा कितना हुआ 90 रुपीज, मल्टीप्लाई x, 2x square plus 3x is equal to 90, 2x square plus 3x minus 90 is equal to 0. Do middle term splitting and you will find the answer. Now, this is chapter 4 and in chapter 4 middle term splitting का एक alternative है जो तुम यूज कर सकते हो, श्रीधर आचार्य's जनरल फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य's फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला से भी आंसर आता है d is equal to b square minus 4ac। तो ये इक्वेशन देख के abc की वैल्यू फाइंड करो। a is 2, b is 3, c is minus 90, so d is b square minus 4ac, 9 और c minus 90 है, हाँ 9, minus 4 and minus 90 becomes plus, 4 2s are 8, 8 9s are 72, 720, and 9 plus 720 is 729। अल्फा माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2a माइनस 3 प्लस रूट 729 अपॉन 2a माइनस 3 प्लस, अब रूट 729 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 29 इंटू 29। देखो 8th स्टैंडर्ड में कहा था 30 तक बाय हार्ट कर लो तो जीवन में शांति होगी। अरे भाई चल रही, 29 इंटू 29 841, ये तो गलत गैस निकला। तो नेक्स्ट 9 कहां आता है, 23 इंटू 23, ये तो 529 हो गया। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कहां आता है, 26 इंटू 26, 27 इंटू 27, 27 इंटू 27, 729। So 27 is the correct answer. So please by heart square roots up to 30. 27 minus 3, 24, 24 upon 4, 6. Beta minus b plus root d upon 2a। प्लस नहीं रे, माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस 3 माइनस रूट 729 अपॉन 2 माइनस 3
minus 27 upon 4 minus 30 upon 4 minus 15 by 2. Let's see मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके सेम आंसर आता कि नहीं. 6 and minus 15 by 2. I am showing you how to do middle term splitting of the main equation and comparing with Sridhar Acharya's method. 2x square plus 3x minus 19. 2x square plus 3x minus 90. 2 into minus 90. Don't multiply but factorize. एक माइनस है, 2 है, 3 3 9, 2 और 5 इतने मेंबर्स है. 3 लेके आना है. 2 3 6, 2 12 मिल गया. 2 3 6, 2 12 with a minus और बचा 3 और 5 15. 15 minus 12 3. 2x square minus 12x plus 15x minus 90. Take common. 2x common. X minus 6 plus 15 common. X minus 6. X minus 6. 2x plus 15. Therefore, 6 and minus 15 upon 2 are the two zeros of the quadratic polynomial. 6 minus 15 by 2. It is perfectly okay to do whatever method you like. Problem sum में कोई restriction नहीं है. You can do whatever you want to. श्रीधर आचार्य करो या middle term splitting करो. X की value आई 6. Going back to the problem sum. X is 6 means there are 6 articles which are produced. और ये 6 articles की cost 2 6 12 plus 3 15 rupees each. और 15 रुपीस के 6 आर्टिकल बनाओगे तो टोटल कॉस्ट 90 ही होगी. Alright, let me make one very similar sum like this because I think this was slightly tough. An industry producing plastic pots makes some pots daily. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 1 less than thrice the number of articles. One less than thrice the number of articles. और उस दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 140 है. Find number of pots produced and the cost of each pot. It's very similar.
I am attempting to explain everything once again. There are 3 players in this sum. The first player is number of pots, cost of each pot, and total cost of production. Number of pots, cost of each pot, and total cost. Total cost of production is 140. ये खुद में एक इंडिकेशन है कि ऊपर के 2 assumption में काम आएंगे. अब assumption का इक्वेशन कहां से ढूंढोगे? ये रहा. If the cost of production of each article, cost of each article was found out, ये रहा was 1 less thrice number of articles, 1 less thrice number of articles. So let the number of articles or number of pots be x. तो thrice मतलब thrice x और 1 less मतलब -1. Cost of each pot is 3x minus 1. assumption हो गया, एक सेंटेंस यूज हो चुका है. अब इक्वेशन बनाते हैं. इक्वेशन फिक्स है. नंबर ऑफ पॉट्स multiplied by cost of each pot gives you total cost. Number of pots x, cost of each pot 3x minus 1 is equal to total cost 140 rupees. 3x square minus x 140. Rearrange the equation. 3x square minus x minus 140 is 0. First, I will show you Sridhar Acharya's formula. Sridhar Acharya's formula requires you to make a list of A, B, C. D is equal to B square minus 4AC minus 1 square minus 4, 3 minus 140. 1 plus 4 into 14 into 3. 1680. 1681. Now we'll use the formula of alpha and beta. Alpha is equal to minus b plus root d upon 2a. Alpha is equal to minus b plus root d upon 2a. Minus 1 plus root 1681 upon 2a. Again I am telling you square roots by heart होने चाहिए. Root 1681 is 41 का square. 42 upon 6. Alpha आ गया 7. Beta minus b minus root d upon 2a. Minus 1 plus root 1681 upon 2 into 3. 1 अरे प्लस कहां से आएगा, माइनस आएगा, सॉरी. minus 41 upon 6. minus 40 upon 6. minus 20 upon 3. So 7 and minus 20 upon 3.
But instead of that, if I choose to do middle term splitting, then how will it come? 3x square minus x minus 140. 3 into minus 140 is 3 minus 2, 7, 2, 5. 3, 2, 7, 2, 5 और एक माइनस की साइन सेट करनी है. हो गया, मिल गया. -2 और 2, 5. That's -20. And 3 sevens are 21. बट -20 और +21 से तो +1 मिलेगा, मुझे -1 चाहिए. सो +20 एंड -21 में कर सकता हूँ. दैट्स द मिडल टर्म स्प्लिटिंग. 3x square minus 21x plus 20x minus 140. What is common? 3x. X minus 7 plus 20 common, x minus 7. X minus 7, 3x plus 20, x is 7 और minus 20 upon 3. आया दोनों सेम. Therefore you are free to use whichever method you want, but please get the correct answer. X is 7. Therefore number of pots produced is 7. Cost of one pot is 3 sevens are 21 minus 1 20. और 20-20 रुपए के 7 पॉट तो खर्चा 140 रुपए ही होगा. Anyways, that's the end of exercise 4.2. We have solved 1, 2, 3 and 4 type of sums. मैं एक और टाइप कराता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. कहां से सम निकलते देखो, कोई अता पता नहीं है, बट सम बनाया है. Product of Sunita's age 2 years ago and her age 4 years from now is one more than twice her present age. What is her present age indicates. Let present age of Sunita be x. Product मतलब multiplication of two things. Product of Sunita's age 2 years ago. क्वेश्चन का मतलब समझो. आज सुनीता x साल की है, तो सुनीता's एज 2 years ago कितना होगा? x minus 2. उसका प्रोडक्ट किसके साथ? her age 4 years from now. आज से 4 साल बाद. आज सुनीता x है तो 4 साल बाद x plus 4 is how much? is equal to, and is equal to how much? वो is के बाद लिखा है is 1 more twice present age. 1 more twice present age बन गया इक्वेशन. बस इसको सॉल्व करो. x minus 2 into x plus 4 is 2x plus 1. x square मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं.
is 2x plus 1. 2x plus 1. 2x cut. x square minus 9 is 0. वाह वाह वाह, बधाई हो. मिडल टर्म ही नहीं है तो स्प्लिट क्या करोगे? तुम ये करोगे x square minus 9 means x square minus 3 square, and x square minus 3 square is x plus 3 into x minus 3. We used an identity and got the answer x is minus 3 or x is 3. बस सुनीता's age 3 years. समझ में आया? एक सिंगल सेंटेंस और कैसा भयानक सम बन गया. ऐसा एक और सम बनाता हूं और तुमको दिखाता हूं. ओके. सुनीता जैसा एक सम जो सिंगल सेंटेंस होगा. प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ राजू बिफोर 5 years and age of Raju after 2 years is 6 more than 3 times his present age. Find Raju's present age. Alright, the last sentence indicates कि किसको x लेना है. Find Raju's present age. Let present age of Raju is equal to x. Product, multiplication of age of Raju before 5 years, x minus 5, and age of Raju after 2 years, x plus 2, is, ये बहुत चमत्कारिक वर्ड है. जहां पे is आया वहां बाउंड्री बन जाती है. अब जो है वो राइट साइड पे होगा 6 more than 3 times present age. 6 more than 3 times present age. बन गया इक्वेशन. डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, तुम्हें 2 स्टेप की जरूरत पड़ेगी. आलस मत करना. x square minus 6x minus 16, x minus 8, मिडल टर्म स्प्लिटिंग डायरेक्ट कर रहा हूं, x plus 2, therefore 8 and minus 2 are the two values. Negative नहीं, the age of Raju is 8 years. तो एकदम छुपे रुस्तम सम निकाला. ये भी कुछ तो है, क्या है? नहीं, कुछ नहीं. ये बाद में करेंगे. मोटर बोट तो लास्ट टाइम किया क्या नहीं किया? Alright, so this is where we are ending the lecture. Today we did the first type of sum, which is sum is given, product is given, find the two numbers. ऐसे 5 सम होंगे होमवर्क में. फिर सम ऑफ स्क्वायर, ऐसे 5 सम होंगे. ऑल्टीट्यूड, राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनियस, पाइथागोरस, ऐसे 5 सम होंगे. कॉटेज इंडस्ट्री, नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, एंड लास्ट करेंगे एज वाला. So 5 types, 25 sums is good enough. Best of luck.